ये सेकंड वीडियो है एम लक्ष्मीकांत के रिवीजन का। हमने फर्स्ट वीडियो में फंडामेंटल राइट्स को रिवाइज किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को रिवाइज करेंगे। इसमें 20 क्वेश्चंस है। 20 क्वेश्चंस पूरे चैप्टर को कवर करते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज आर नॉन जस्टिसेबल बाय द कोर्ट्स। हमें यह बताना है कि कौन सा पार्ट नॉन जस्टिसेबल है। फर्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स, सेकंड फंडामेंटल ड्यूटीज, थर्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। हमें बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है यूजिंग द कोट्स गिवन बिलो। सो हियर करेक्ट आंसर इज सी विच इज 2 and 3. Fundamental duties and directive principle of state policies are non-justiciable in the courts. फंडामेंटल ड्यूटीज़ के डायरेक्ट इन्फोर्समेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रोविज़न नहीं है, जबकि पार्लियामेंट अगर चाहे तो इन्हें इन्फोर्स कर सकती है बाय सूटेबल लेजिस्लेशन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज भी नॉन जस्टिसेबल है। दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स फॉर देयर वायलेशन। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट को कंपेल नहीं किया जा सकता है डीपीएसपीस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। जबकि आर्टिकल 37 ये कहता है कि जो डीपीएसपीस है वो फंडामेंटल है इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री और स्टेट को इन्हें अप्लाई करना है जब वो लॉज बना रहे हो। फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल है। जो एग्रीव्ड पर्सन होता है वो डायरेक्टली कोर्ट जा सकता है अगर उन्हें वायलेट किया जा सकता है और इन्हें डिफेंड किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जो एग्रीव्ड पर्सन होगा वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट में भी इन्हें इन्फोर्स किया जाता है अंडर आर्टिकल 226। Next question is to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years is a provision made in Fundamental Duties, Directive Principles of State Policies, Fundamental Rights, 11th Schedule. So here correct answer is B, which is Directive Principles of State Policies. Directive Principles of State Policy को enumerate किया गया है in Part 4 of the Constitution from Article 36 to 51. डीपीएसपीस को बोरो किया गया है फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1937 और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे कॉपी किया गया है फ्रॉम द स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन। 86th Constitutional Amendment Act 2002 changed the subject matter of Article 45 and this amended directive requires the state to provide early childhood care and education to all children until they complete the age of 6 years. And this amendment act, 86th Constitutional Amendment Act of 2002 made elementary education a fundamental rights under Article 21A. And this amendment also added new fundamental duties which provides opportunities for education to his child or ward between the age of 6 and 14 years. Next question is which of the following two directive principles of state policies have been precedence over fundamental rights under Article 14 and Article 19? This question is very important. So, first option is Article 38 and Article 40. Second option is Article 50 and Article 51. Third is Article 44 and Article 48, and last is Article 39B and Article 39C. So here correct answer is D, which is Article 39B and Article 39C. So let's discuss this provision. पहले हम आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C के सब्जेक्ट मैटर को समझते हैं। आर्टिकल 39B provides for equitable distribution of material resources of the community for the common good. इसका मतलब यह है कि स्टेट ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जो कम्युनिटी का मटेरियल रिसोर्सेज का ओनरशिप और कंट्रोल है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो जो प्रमोट करे कॉमन गुड को। और आर्टिकल 39C प्रोवाइड्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब यह है कि स्टेट इस तरह की पॉलिसीज़ बनाए जो इकोनॉमिक सिस्टम ऑपरेट हो रहा है वो रिजल्ट ना करे कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को इन फ्यू इंडिविजुअल। गोलखनाथ केस 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकता है। इसके रिस्पॉन्ड में पार्लियामेंट ने एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया था विच इज़ 25th अमेंडमेंट एक्ट
इस अमेंडमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 31C को इंसर्ट किया। आर्टिकल 31C में दो प्रोविजन है। चलिए इन दोनों प्रोविजन को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रोविजन ये है, अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है जो इम्प्लीमेंट करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज इन आर्टिकल 39V एंड आर्टिकल 39C, और अगर इस प्रोसेस में वो लॉ वायलेट करता है आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 जो पहले राइट टू प्रॉपर्टी था, तो उस केस में उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड विच इज इनवैलिड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है। और सेकंड प्रोविजन ये है कि अगर कोई लॉ जो इम्प्लीमेंट कर रहा है आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C को, उस लॉ को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में, यानी कि उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है। सो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा था कि ये दो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है अंडर आर्टिकल 39B और 39C, जिनको प्रेसिडेंस दिया गया है ओवर फंडामेंटल राइट्स इन आर्टिकल 14 एंड 19। सो डी इज हियर करेक्ट आंसर। Next question is, who among the following described directive principle of state policies as the moral precepts of the authorities of the state? So here correct answer is Venegal Narsingh Rao, which is B. B.N. Rao डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को मोरल प्रिसेप्ट्स फॉर द अथॉरिटीज ऑफ द स्टेट कहते हैं। B.N. राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और एलन सिंघवी जो एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट और डिप्लोमेट थे, उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लाइफ गिविंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। टी कृष्णमचारी, इन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अ वर्टिबल डस्टबिन ऑफ सेंटिमेंट्स कहा है। के संथनम ये पॉइंट आउट करता है कि डायरेक्टिव्स लीड्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, बिटवीन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर एंड बिटवीन गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर्स। ये कहते हैं कि सेंटर जो है वो डायरेक्शन देते हैं स्टेट को टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, और अगर स्टेट नॉन कॉम्प्लायंस करते हैं उन डायरेक्शंस को तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसमिस कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट को, और जिससे एक दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। अगर आपको डिटेल्ड पीडीएफ चाहिए तो आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं सो दैट यू कैन गेट रेगुलर अपडेट्स ऑफ नोट्स एंड पीडीएफ्स। Next question is, it is described as the novel features of the Indian Constitution. It is meant to promote the ideals of socio and economic democracy. They seeks to establish the welfare state in India. The above passage describe which of the following? Directive principles of state policies, fundamental rights, fundamental duties, and last is preamble. So here correct answer is A, which is directive principle of state policy. Directive principle of state policies को नोवल फीचर कहा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये प्रमोट करते हैं आइडियल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, और ये एस्टेब्लिश करना चाहते हैं एक वेलफेयर स्टेट। Next question is, which of the following provisions of the Constitution of India have a direct bearing on education? Directive principle of state policy, fundamental rights, preamble, fundamental duties. तो हमें यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है। सो हियर करेक्ट आंसर इज 1, 2 and 4, which is B. First statement is directive principle of state policy. Article 45 says that the state shall endeavor to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years. So education and early childhood care का provision है under Article 45 up to 6 years. सेकेंड इज फंडामेंटल राइट्स। इस केस में हम 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 को डिस्कस करेंगे। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 ने एक न्यू फंडामेंटल राइट्स ऐड किया था अंडर आर्टिकल 21A, और ये फंडामेंटल राइट्स था द स्टेट शेल प्रोवाइड्स फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन of the age of 6 to 14 years. So it covers the children between 6 and 14 years of age. थर्ड इज प्रीम्बल। प्रीम्बल में कोई भी प्रोविजन नहीं है रिगार्डिंग एजुकेशन। एंड फोर्थ इज फंडामेंटल ड्यूटीज। अगेन द सेम अमेंडमेंट एक्ट 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 एडिड अ न्यू फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर पार्ट 4A एंड आर्टिकल 51A, और ये फंडामेंटल ड्यूटी थी
who is parent or guardian to provide opportunity for education to his child, or as in case may be ward between the age of 6 and 14 years. So here correct answer is B, which is 1, 2 and 4 only. Next question is the 86th constitutional amendment inserted changed article in which of the following part of the constitution. As we have already discussed, 86th constitutional amendment act changed or inserted article in part 3 which is 21A and part 4 which changed the subject matter of article 45 and part 4A which added a new fundamental duties under article 51A. So here correct answer is D, which is 1, 2 and 3. Next question is, which of the following provisions are outside part 4 of the constitution? First is freedom from attending religious instruction in certain educational institution. Second is to provide education for children until they completed the age of 6 years, to protect and improve the natural environment. Fourth is no person shall be deprived of his प्रॉपर्टी से बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ. हमें यहाँ पे बताना है कि कौन से प्रोविजन है जो फोर्थ पार्ट में नहीं है. तो हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं. जो फर्स्ट प्रोविजन है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, दैट इज अंडर आर्टिकल 28 और ये आता है पार्ट 3 के अंडर. दिस इज आउटसाइड पार्ट 4. टू प्रोवाइड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स, और ये सब्जेक्ट मैटर है आर्टिकल 45 का, और आर्टिकल 45 आता है अंडर पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो ये तो करेक्ट नहीं होगा. टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है अंडर आर्टिकल 51A विच इज पार्ट 4A. नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी से बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अंडर आर्टिकल 300A. सो हियर 1, 3 and 4 आर करेक्ट. सो करेक्ट आंसर हियर इज डी. ये सारे प्रोविजन आउटसाइड पार्ट 4 है. नेक्स्ट इज द वर्ड पॉलिटिकल जस्टिस इज मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर the preamble only, the preamble and directive principles of the state policy, the fundamental rights and the directive principles of state policy, and last is the preamble and fundamental rights. Here correct answer is B. Political justice जो term है that is mentioned in the preamble and under directive principles of the state policy under article 38 of part 4. आर्टिकल 38 का जो सब्जेक्ट मैटर है दैट इज द स्टेट शेल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग एज इफेक्टिवली एज इट मे अ सोशल ऑर्डर इन विच जस्टिस, social, economic and political shall inform all the institution of national life. So here correct answer is B. Next is, which of the following statements correctly describes the directive principles of the state policy in Indian Constitution? हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज दे आर प्रिंसिपल्स दैट ले डाउन that the goals of the Indian polity is political democracy. They are the step needed to prepare the masses for communist struggle. They are moral precepts for authorities of the state. They are recommendations of the applications of the ancient Indian wisdom to solve the problems of modern world. So here correct answer is C. They are the moral precepts for the authorities of the state. और ये statement है सर B.N. राव का. जो first statement है that is true about the fundamental right, not about directive principles, because the directive principles promote social and economic democracy, whereas the fundamental rights promote political democracy. Next is, consider the following provisions in directive principles of the state policy. To secure opportunities for healthy development of children, to promote equal justice and provide free legal aid to the poor, to minimize inequalities in income, status, facilities and opportunities, to protect and improve the environment, and to safeguard forest and wildlife. Which of the above given provisions were added by the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976? Here correct answer is C, which is 1, 2 and 4. 1, 2 and 4
were added by 42nd Constitutional Amendment Act of 1976. हम यहाँ पे ये देखेंगे कि कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए गए हैं. एज वी ऑलरेडी नो, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 44th अमेंडमेंट एक्ट, 86th अमेंडमेंट एक्ट और 97th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू डिफरेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में. तो हम यहाँ पे वन बाय वन इनको देखते हैं. 42nd Amendment Act 1976 added four new directive principles. First is to secure opportunities for healthy development of children. This was added under Article 39. Second, to promote equal justice and provide free legal aid to the poor. This was added under Article 39A. And third is to take steps to secure the participation of workers in the management of the industries. This was added under Article 43A. And fourth is to protect and improve the environment, and this principle was added under Article 48A of the Constitution. And 44th Amendment Act added one more directive principle, which is to minimize inequalities in income, status and facilities and opportunities, and this principle was added under Article 38. 86th Constitutional Amendment Act 2002 changed the subject matter of Article 45 and added fundamental rights under Article 21A and fundamental duties under Article 51A. The 97th Constitutional Amendment Act of 2011 added a new directive principle relating to cooperative societies. So these were the new directive principles added through various constitutional amendment acts. Next is directive principles of state policies were made non-justiciable in nature because of first statement is lack of financial resources for implementation. This statement is correct. जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम पे इंडिया के पास इतना फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे कि सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट किया जा सके. और second statement is the belief of the constitution makers on public opinion as the ultimate sanctions of the fulfillment of these principles. एज वी नो, जो एजुकेशनल बैकवर्डनेस था उस टाइम कंट्री में वो बहुत ज़्यादा था और ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के कारण, डिफरेंट रिलीजन होने के कारण उस टाइम इन प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता था क्योंकि लोग जो है वो इतने लिबरल नहीं थे. तो इन्हें इसलिए नॉन इन्फोर्सेबल और नॉन जस्टिसेबल बनाया गया ताकि इन्हें टाइम आने के साथ ही इम्प्लीमेंट किया जाएगा. सो हियर सी इज करेक्ट, विच मीन्स बोथ द स्टेटमेंट हियर आर करेक्ट. Next question is, Constitution of India ensures the protection of women's right and welfare through which of the following? Article 14, Article 16, Article 39A. So here all the three statements are correct. So first statement here is correct, which is 1, 2 and 3. As we know, Article 14 expresses that the state shall not deny to any persons the equality before the law and equal protection of the laws within the territory of India. Second is Article 16. This provides that there shall be equality of opportunities for all citizens and they shall not be discriminated on the basis of religion, race, caste and sex. And Article 39A, the Constitution provides that the state in particular direct its policies towards securing that citizens, men and women, equally have the rights to an adequate means of livelihood. So here all the three statements are correct. Next is, which of the following directive principles were added by 42nd Constitutional Amendment Act of 1976? As we have already discussed, 42nd Amendment Act of 1976 added four new directive principles. So here first is to promote equal justice and to provide free legal aid to the poor. Second is to minimize inequalities in income, status, facilities and opportunities. Third is to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife. So here correct answer is C, which is 1 and 3 only. जो second है to minimize the inequalities in income, status, facilities and opportunities. This was added under 44th Constitutional Amendment Act of 1978 under Article 38.
Next is consider the following pairs regarding the Constitutional Amendment Act and their objectives. First is 24th Amendment. Parliament can amend fundamental rights. This statement is correct. 42nd Amendment, Introduction of Fundamental Duties. This is also correct. 42nd Amendment Act 1976 ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, जिसके लिए इंसर्ट किया था एक नया पार्ट विच इज़ पार्ट 4A एंड आर्टिकल 51A. Third is 61st Amendment, reducing the age of voting to 18 years. Yes, this is also correct. So here all the statement matched correctly. Correct answer is D. Next is Directive Principle of State Policy provides for the goal and objectives that a society should adopt. This statement is correct. Second is the rights that individuals should enjoy apart from fundamental rights. This statement is also correct. The policies that the government should adopt. This is also correct. So here all the three statements are correct. So correct answer is D. Next is with reference to directive principles provided under Part 4 of the Indian Constitution, consider the following statements. First is promoting cottage industries on an individual or cooperation basis in rural areas. Second is public assistance in case of old age, sickness and disablement and right to work. Third is promoting the educational and economic interests of SC, STs and other weaker section of the societies. And fourth is promoting the voluntary formation of cooperative societies. So हमें यहाँ पे बताना है कि कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल गांधीयन आइडियोलॉजी पे बेस्ड है. So here correct answer is C, which is 1, 3 and 4 only. डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है 3 कैटेगरीज में, which is socialistic, Gandhian and liberal intellectual. First statement is promoting cottage industries on an individual or corporation basis in rural areas. This is a Gandhian principle under Article 43. Second is public assistance in case of old age, sickness and disablement and right to work. This is a socialistic principle under Article 41. Third is promoting the educational and economic interest of SC, ST and other weaker section is a Gandhian principle and which is under Article 46. And last is promoting the voluntary formation of cooperative societies is also a Gandhian principle under Article 43B. So here correct answer is C, which is 1, 3 and 4 only. Next is which of the following directive principles were added through Constitutional Amendment Acts? To promote equal justice and to provide free legal aid to poor. Second is to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife. Third is to minimize inequalities in income, status, facilities and opportunities, to raise the level of nutrition and standard of living of the people and to improve public health. Select the correct answer using the code given below. First and second were added by the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976 and third was added through 44th Constitutional Amendment Act of 1978. Fourth is originally there in the Constitution and it is under Article 47 of the Constitution. So here correct answer is A, which is 1, 2 and 3 only. Consider the following: promotion of the education and economic interest of the weaker section, provisions for just and human condition of work, organization of the agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines. Fourth is promotion of cooperative societies. Which of the above directive principles of the state policy can be classified as Gandhian principle? Correct answer is C, which is 1 and 4 only. First is promotion of the education and economic interest of the weaker section. It is under Article 46. And fourth is promotion of the cooperative society and this is under Article 43B. So these two are Gandhian principle here, whereas provision for just and human condition of work, it is a socialistic principles under Article 42. And third is organization of the agriculture and animal husbandry on modern and scientific line is a liberal intellectual principle under Article 48.
Next question is, under the Constitution of India, which of the following is not mentioned in the directive principle of state policy? First is to provide adequate facilities for instruction in mother tongue at primary stage of education. Second is to prohibit the consumption of intoxicating drinks, to promote the voluntary formation of cooperative society, to take into account the claims of making scheduled tribes in appointments to service of union. सो हमें यहाँ पे बताना कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में मेंशन नहीं है. सो हियर करेक्ट आंसर इज A, which is 1 and 4 only. To provide adequate facilities for instruction in mother tongue at primary stage of the education. This provision is provided under Article 350A of the Constitution. And second is to take into account the claims of making scheduled tribes in appointment of the service in the union. This provision is made under Article 335 of the Constitution. So these two are the statement which is outside of the directive principle of the state policy. As we have already discussed that the directive principles are under Part 4 of the Constitution from Article 36 to 51 of the Constitution. So here correct answer is A, which is 1 and 4 only. आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से. टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा दैट इज़ ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज़. तो आप इसको रिवाइज करने के बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रिवाइज करिए और जो वीडियो होगा वो 4 से 5 दिन में अपलोड हो जाएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.